Dear students, welcome to my YouTube channel PCM Academy, and we are in a lecture series for JEE Main, NEET and JEE Advanced. And in the previous classes I have discussed about normal reaction and tensional force. नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशनल फोर्स के बारे में बहुत डिटेल में हम बात किया था, और इस लेक्चर के लिए जो आज हम डिस्कस करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम. और टू डिस्कस द फ्री बॉडी डायग्राम, टू अंडरस्टैंड द फ्री बॉडी डायग्राम, वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ टेंशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन. जो अभी तक आप टेंशनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का वीडियो आप नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए और वो दोनों वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जब हम फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस करने जा रहा हूँ तो नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशनल फोर्स का नॉलेज आपको चाहिए. सो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अ सिस्टम, हियर एक्चुअली इन न्यूटन्स लॉ और इन मैकेनिक्स यू कैन से, basically we are going to analyze the forces that are acting on the system, and we will be interested to know the equation of motion of each and every object. So we need to know the forces acting on each and every object. Okay, separately हमको ये स्टडी करना पड़ेगा कि ईच एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, क्योंकि जब हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी करेंगे तो उसके लिए द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. बट वी विल नॉट ड्रॉ द फोर्सेस इन द फ्री बॉडी डायग्राम व्हिच फोर्सेस आर गिवन बाय द ऑब्जेक्ट टू अदर्स ऑब्जेक्ट्स. समटाइम्स क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इन अ सिस्टम इफ देर आर मोर देन वन बॉडीज, 2-3 बॉडीज, एंड मोस्ट ऑफ द सिस्टम देर इन्वॉल्व्स 2 and 3 ऑब्जेक्ट्स. सो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट्स दूसरे ऑब्जेक्ट्स के फोर्स तो लगाएंगे, लेकिन उस ऑब्जेक्ट भी एक रिएक्शन फोर्स देगा. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, देयर विल सम फोर्सेस व्हिच आर इन पेयर इन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस. सो अ ऑब्जेक्ट फील्स अ फोर्स एंड एट द सेम टाइम्स द ऑब्जेक्ट्स विल गिव फोर्सेस टू अदर्स ऑब्जेक्ट्स. बट जब हम फ्री बॉडी डायग्राम के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा, at that moment we have to understand or we have to look the forces acting on a particular object, क्योंकि हम उस ऑब्जेक्ट के लिए फ्री बॉडी डायग्राम और उस ऑब्जेक्ट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहता है. ओके, सो लेट मी टेक एन एग्जांपल दैट द थिंग विल बी वेरी क्लियर टू यू. सो फर्स्ट लेट मी टेक अ वेरी कॉमन एग्जांपल, टू बॉडी सिस्टम like this maybe. Okay, so what are the forces acting? Let this is the mass of capital M and this is the mass small m. Okay, two objects are situated like this. So फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? इस दोनों ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग डायग्राम है जिसके ऊपर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी शोन. ओके, सो फॉर द मास कैपिटल M, if you draw the free body diagram for the mass capital M, then what will be the thing? For capital M, FBD of capital M, you can say FBD of कैपिटल M. ओके, सो हम ये ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हो. सो दिस इज अ मास M. सो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट और दिस मास, वी हैव टू लुक. सो अब फोर्सेस दैट विल मस्ट बी द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट विल अराइज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज mg, एंड दिस इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, बट ड्यू टू दिस contact surface there will arise a contact force called normal reaction, you know, and that will act opposite to this mg. Okay, so let me take this as n. So here is mg, okay, and another is m. These two forces are arise first. This is n. Now let me see the above object that is of mass small m. सो स्मॉल m के ऊपर क्या क्या फोर्स एक्टिंग कर रहा है? ये ड्यू टू दिस कॉन्टैक्ट सरफेस इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन रिएक्शन फोर्स विल अराइज. सो द मास m will exert a force, a normal reaction you can say n. Let me take it as n1. So the object will react with the same force n1, and this object will feel another force, that is mg. Okay, so and
So in this object capital M, on capital M you can say there is a force N1. You can say this mass M will exert with the force N1 to this object M, capital M. So on capital M, what are the forces acting? Please keep in mind, we are interested to know the forces acting on this mass capital M. ये कैपिटल एम मास के ऊपर क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, ये हमको इंटरेस्ट है, क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहूंगा. आफ्टर नोइंग द न्यूटन सेकंड लॉ, आफ्टर studying the Newton's second law, we will see how to write down the equation of motion. But before writing down the equation of motion, this is a step you can say that you have to draw the free body diagram of each and every object. And in that case, what we will see the forces acting on each and individual object. So इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है ये हमको जरूरत है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या क्या फोर्स दे रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है. सो यहाँ पर जो कैपिटल एम मास है, कैपिटल एम जो ब्लॉक है, इसके ऊपर क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है. एक तो नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड दे रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन, और एक फोर्स है जो ग्रेविटी इसके ऊपर खींच रहा है बाय द फोर्स mg. सो इट विल एक्टिंग डाउनवर्ड. नाउ फॉर दिस मास कैपिटल एम, दिस mg force is not acting on this object capital M, but due to this mg, small mg, the small block of mass m will give a reaction force N1, and the block of mass capital M will exert with the same force N1. The action is this N1 are the action reaction force. Here also action reaction force in capital M, which is given by the object to the ground. But we are not interested about the forces acting on the ground. Okay, so we have just ignored this force because this force is not, you cannot, we don't need to consider this force capital N in the system. But if you want to know the free body diagram of ground, then ground के ऊपर क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है? Only capital N. This capital N will act on the ground, so the ground will react with the same force capital N. और ये जो mg फोर्स है ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है. सो ये तो ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रहा है विद द फोर्स कैपिटल mg. सो ये है mg, ये है n. बट हियर आल्सो द सेम सिचुएशन, n mg, n1 mg. बट व्हिच फोर्सेस इज एक्टिंग ऑन द मास कैपिटल m? दैट इज ओनली यू कैन से n1. ये n1 फोर्स जो इस n1 फोर्स जो दे रहा है स्मॉल m टू कैपिटल m, इस n1 फोर्स, सिर्फ ये n1 फोर्स की हम कंसिडर करेंगे on for the free body diagram of capital M. So to the object capital M, another force N1 is acting in downward direction. Are you understanding? So on the mass capital M, you can see there are lot of forces, 6 forces. So you will be confused. So which force you should take, which force you should not take, and that's why this is very important. This free body diagram is very important. You have to separate the objects, and then you have to look the forces which are acting on this object. So this is very helpful actually for problem solving purpose. Okay, so you can see और कोई फोर्स नहीं है जो कैपिटल M के ऊपर काम कर रहा है. You can see now, so कैपिटल M के ऊपर जो फोर्स है वो कैपिटल N है एक, और एक mg है, और एक n1 है जो स्मॉल m कैपिटल M के ऊपर दे रहा है. Now if we want to know the free body diagram of small m, FBD of small m, then what we will see? We will see the forces acting on small m now. So small m के ऊपर क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है? एक फोर्स तो mg होगा ही होगा, स्मॉल mg, और अनदर फोर्स जो है वो है n1 which is acting by the mass capital M to mass small m. So it will be acting in upward direction. Okay, so this will be the free body diagram of capital M, and this will be the free body diagram for small m. Now what will be n1